ये मेरे हस्बैंड है जसबीर सिंह, मेरा नाम है सतिंदर ढिंग था। हार्ट में थोड़े सांस लेने में दिक्कत हुई, हम यहाँ पर कैलाश दीपक हॉस्पिटल में आए, जबकि हमारे को डॉक्टर अमिताभ ने हैंडल करा। उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह सब करे, जिसके राही हमारे को पता चला कि हार्ट का वॉल लीक है। वॉल लीकेज की वजह सर्जरी के लिए बताया गया। हमने फिर सर्जरी वगैरह यहाँ से करवाई, डॉक्टर मितेश, उनसे हम मिले थे उस टाइम पे कि हमारे में हिम्मत नहीं थी कि कैसे होगा क्या होगा। बट जब सर्जरी हुई, अब 3 महीने हो गए हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल है इनकी सर्जरी। तो डॉक्टर मितेश और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, सब चीज से कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को। हम यही चाहते हैं किसी और को भी ऐसा भगवान करे ना कुछ, अगर हो तो कैलाश दीपक हॉस्पिटल में डॉक्टर मितेश से मिले। धन्यवाद। I'm Dr. Mitesh Sharma. I'm head of Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery at Kailash Deepak Hospital. Recently, Jasbir Singh, a 67-year-old male patient, he presented to us with severe breathing difficulty. He had this difficulty which was increasing since last 1 year, and he had not undergone any tests, but he was consulting his family doctor, and then when the echo was done, echo showed that he had severe mitral regurgitation, that is leakage of the mitral valve of the heart. And when I saw it on echo, the valve was very diseased, so I had advised him to undergo mitral valve replacement surgery with artificial heart valve, and we conducted the operation here, and the patient recovered very smoothly and went home within a week of the surgery. Now he has just come to show me after 3 months of surgery, and he is recovering extremely well. He can now walk without any problem for about 1.5-2 kilometers. He is attending to all his official work and his business also, and he is doing very well. Thank you.